बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। डी टीचर्स, आज हम एक और डबल डिजिट नंबर के प्रैक्टिस करने लगे हैं एंड द नंबर इज नंबर 14। टॉपिक जो है किताब के सफ़े पे स्किल्स के साथ दिया गया है, रिकग्निशन ऑफ द नंबर 14। दैट मीन्स चिल्ड्रन विल लर्न टुडे हाउ टू राइट दिस नंबर, how to count this number, how to be able to identify it between different written numbers। तो जब हम बच्चों को different mediums देंगे तो वहाँ से जब बच्चे हमें खुद देखते ही बता देंगे कि this is number 14, या objects को count करके बताएंगे these are 14 objects, that means कि आज इनकी इस चीज़ की recognition को हमने built up करना है। So what is the expected learning outcome? The expected learning outcome says by the time they finish their ECCE 3 years or 2 years or maybe 1 year, they should be able to identify numbers and write them between 0 to 50. So if you have a 3-year school, preschool, that means कि हम gradually primary numbers से secondary numbers पे move करें and then we will move on to number operations. लेकिन if you have some children who are appearing in nursery class and they have not been a part of playgroup, तो टीचर्स आपने ये वर्किंग करके रखनी है कि आपने उनको प्ले ग्रुप के कौन कौन से लेक्चर्स या लेसन्स के QR कोड्स या वीडियोस उनको प्रोवाइड करनी है सो दैट दे कैन मीट अप योर एक्सपेक्टेशंस और यहाँ तक आते आते उनका पिछला काम रिवाइज हो जाए। सो ऑफ एंड ऑन इन माय लेसन्स आई गिव यू दिस रिमेंबर, अ पॉइंट टू रिमेंबर, अ पॉइंट टू पॉन्डर ऑन, कि आप बच्चों को पिछला डेटा जितना ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी उतना ही अच्छा वो लर्न करेंगे। So now let's see students, are you able to recall the numbers that I write on the board? तो बच्चों भी आपने मेरी तरफ स्क्रीन पे तवज्जो रखनी है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगी और आपने मुझे जल्दी से उस नंबर का नाम बता देना है और पूरी क्लास एज अ होल बताना है। सो टीचर्स, इस एक्टिविटी को मैं आपको एज अ स्टार्टअप दिखा रही हूँ, एज अ सजेशन दे रही हूँ कि इस तरह से आपने नोटिफिकेशन करनी है अपने बारे में कि बच्चों से पूछे, रिस्पॉन्स लें कि इनको ये नंबर्स के नाम आ गए हैं या नहीं। एंड इफ यू कैन आस्क देम टू काउंट ऑब्जेक्ट्स दैट वुड बी वंडरफुल। लेकिन अभी चूंकि हम रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, सो लेट्स सी इफ चिल्ड्रन कैन आंसर व्हाट नंबर दे कैन सी ऑन द बोर्ड। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। नाउ चिल्ड्रन, यू आर गोइंग टू सी अ नंबर ऑन द बोर्ड। आपने मुझे जल्दी से देख के बताना है ये कौन सा नंबर है। व्हाट नंबर इज दिस? 8. Very good. Now let me write another number. What number is this? 5. Very good. What number is this? 4. Excellent. What number do you see now? 10. Wonderful. So teachers, this is how you are going to check their recognition of the previous numbers. 1 से लेके 13 तक के जितने भी नंबर्स इन्होंने सीखे हैं उनको रैंडमली इस तरह बोर्ड पे लिख के आप सब बच्चों से रिस्पॉन्सेज ले लें कि आपका वार्म अप भी हो जाएगा और नेक्स्ट लेसन की हम प्रिपरेशन भी शुरू कर लेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो। नाउ टीचर्स, जब आपने 1 से लेके 13 के नंबर्स तक बोर्ड पे लिख के बच्चों से आइडेंटिफिकेशन करवा ली, तो आज अब ये रेडी हो गए हैं अपना नेक्स्ट टास्क देखने के लिए। सो डू यू वांट टू नो अबाउट द नेक्स्ट नंबर? इफ यू नो द ओरल काउंटिंग, तो आपको पता है बच्चों कि 13 के बाद क्या आता है? 14. शाबाश। नाउ लेट्स सी इफ यू एक्चुअली हैव टू काउंट 14, 14 बना कैसे है? हाउ डिड इट कम टू बीइंग? सो लेट्स सी। You can see an example on the board. What do you see here? There are some bees. Yes, these are bees. Who knows how the bees are buzzing? हमने एक buzzing bee की poem भी GK में सीखी थी. Do you remember that? Good. So teachers, अगर आपने GK की poem को इस lesson के साथ integrate करना as a warm up or as a singing activity, please do that. All these informations are integrated. तो अगर आपने वो poem अभी इसके start में या end पे use करनी है, you can do that. So now, what do you see here? There are bees here, one set of bees here, and there are another set of bees over here. Now, how many do you think are here in set 1? 10. Are they 10? Can you count with me quickly? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, I am going to draw a circle around my 10 bees. This is a one complete set of 10 bees. So, how many more bees do I need to make this 10 into a 14? 1, 2, 3, 4.
4 more. So 10 and 4 more will make 14 bees. Yes, 14 bees. That is how we write the number 14. Now, as you remember, जब हमने 11 सीखा था, 12 सीखा था, 13 सीखा था, so we write 1 first and then comes the next number. Yes. So this is the number 14. 1 and 4 आपको लिखना आता है. 1 and 4 makes the number 14. Now I know you do not have 14 fingers, but what you can do is आप दो friends मिलके अपने हाथों से हमें 14 show कर सकते हैं. Can you show us number 14? One friend will show 10 fingers, yes, and the other friend is going to show how many? 4, yes. So 10 and 4 makes 14. So teachers, if you want to give them some objects to count and bundle up, go ahead, you can do that. अभी this is the right time कि आप इनको कुछ objects की मदद से जो number 14 है उसकी recognition करवा लें. And then if you have flashcards तो वो भी दिखा लें. Meanwhile, I'll pause the video and I'll wait here. Number 14 की identification के बाद is another task for you from the maths corner. बच्चों भी आपने खुद जाना है अपने मैथ कॉर्नर में और वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे उठा के लेके आने हैं. दे कैन बी ब्लॉक्स, दे कैन बी स्मॉल टॉयज, दे कैन बी बीड्स और बटन्स और पेंसिल्स और क्रेयॉन्स, जो भी. लेकिन आपने फ्रेंड्स के साथ जाके वहाँ से ये एक्टिविटी करके लेके आनी है एंड ब्रिंग इट ऑन योर टेबल एंड एक्सप्लेन इट अ शॉर्ट सेंटेंस टू योर क्लासमेट्स दैट आई फाउंड 14 blocks. These are 10. This is a set of 10 and these are 4 separate blocks and all of them together makes a 14. So teachers, इस तरह बच्चों को अपना point of view explain करना आना चाहिए. That is the main key for listening and speaking and reading, that whatever they look at, they should be able to explain it. Then there is a activity for the art corner where you are going to make a poster. So teachers, you know कि हम number writing और number के जो concept building के साथ साथ कुछ oral counting पे भी build up करे हैं. So we take these two concepts side by side. Either if you want, you can do this in the start of the lesson or you can do it by the end of the lesson, but you are going to build up a poster with the help of students. बेहतर ये होगा कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स ले लें या चार्ट पेपर में से काट के बच्चों को ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना दें, and then they can place these numbers and make a poster for the classroom display. And there's a homework also given in this lesson. Teachers, as you know कि आज का lesson हमारा बेस करता है बच्चों की ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग पे, नंबर की रिकग्निशन के ऊपर. So now you're going to give them different opportunities to recognize the number 14 and be able to identify it. इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वर्कशीट आपको दी गई है उसमें बच्चे जो है एक पोस्टर बना रहे हैं from 1 to 14 all by themselves, and the homework is also related that they have to do the oral counting as well. और घर जाके ये number 14 different objects count करके घर में शेयर करेंगे कि they have learned about number 14. The teacher note says the same. So बच्चों, अभी आपने अपनी बुक के पेज पे क्या टास्क करना है? You are going to count and circle 10 bees and then remaining you're going to count them all. All right, so let's move on and wrap up the lesson. Teachers, बच्चों को घर जाके चूँकि oral counting करनी है, so you can have them multiple practices for that, ताकि जब हमारा ये जो task है आज का, they should be able to identify and write. तो writing के context में हम अभी 14 को practice कर रहे हैं और orally हमने इनको आहिस्ता 50 तक move करना है. And for that extra practice, the worksheet is given here in the description box for number 14. So please teachers carry on with the activity और आज number 14 को बच्चे खूब अच्छे तरीके से recognize कर लें. Take care and Allah Hafiz.